Hello friends, welcome to the new video today. So basically today what we will be covering is we will be covering the basic differences between fundamental and technical analysis. So दोस्तों ऐसा है कि आए दिन जब भी हम ट्रेड करते हैं या फिर हम मार्केट में कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर किसी एनालिस्ट को किसी स्टॉक के बारे में अपना रिसर्च शेयर करते हुए देखते हैं, हम ये जनरली देखते हैं कि वो ये दोनों चीज़ें के बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी फंडामेंटली ये कर रही है, कंपनी फंडामेंटली ऐसा ग्रो कर रही है, उसका फंडामेंटल अच्छा लग रहा है। वेयरएज ये भी बोलती हैं कि टेक्निकली कंपनी का बेस स्ट्रांग है, उसके सारे पैटर्न सही आ रहे हैं, उसका चार्ट्स भी सही आ रहा है। तो बेसिकली हम ये नहीं समझ पाते कि व्हाट दीज टू थिंग्स आर. So if you look into any of the analysis or any of the news channel or anything, you'll definitely see that these are the two important things which people generally consider or analysts generally consider to determine whether a stock movement would be positive or a stock movement would be stagnant, a stock movement would be downside, when is the right time to exit, when is the right time to enter, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. So there are a lot of questions that gets answered when you actually know about what exactly is fundamental and what exactly is technical analysis. So from this video friends, I'll try to cover the main difference between what these two things are, and I'll try to explain you what are the different tools that we generally use. But again, what are the tools, how the tools are used, and how you can use the tools in your practical trading experience when you do it. तो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, that would be separately on fundamental and technical analysis, and definitely that would be coming up shortly. तो वो आप देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे किया जाता है. बट ये वीडियो मैंने बेसिकली इसीलिए बनाया है जस्ट टू identify the main differences between these two types of analysis that analysts generally use. So आगे बढ़ते हैं. So जो पहले मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप जो दो बेसिक टाइप्स है जिससे हम एक्चुअली एनालाइज करते हैं कि एक स्टॉक का मूवमेंट कैसे जाएगा नहीं जाएगा, तो उसको अगर देखा जाए, अगर डेफिनेशन के वाइज से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोल रहा है. सो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग सिक्योरिटीज बाय अटेम्प्टिंग टू मेजर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक. तो ये इंट्रिंसिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फंडामेंटल एनालिसिस से हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली ये कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है उसको जज करने का. तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली एक कंपनी का एसेट है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑफ और अ कंपनी. सो बेसिकली एक कंपनी है, एक कंपनी का हो सकता है कि कंपनी के लाखों अरबों शेयर्स हो मार्केट में. उस कंपनी का ये हो सकता है कि उस कंपनी के पास बहुत सारे फिजिकल एसेट्स हो, जिस कंपनी के पास बहुत सारे जमीन हो, उस कंपनी के पास बहुत सारे खुद के बिल्डिंग हो, या ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी का कोई प्राइमरी जो कोई चाइल्ड कंपनी हो, कोई 5-6 कंपनी को उसने मर्ज कर रखा है अपने साथ. तो देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स जो एक्चुअली वी आर कंसिडरिंग एज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. We are considering it as the parent company. So fundamental analysis mainly deals with as a whole picture of that company, and fundamental analysts study everything from the overall economy and industry condition. Why we are saying this? Because when we are doing fundamental analysis, we are not only considering the economic condition of that particular company. There are a lot of other factors also that we are considering, like we are considering the earnings, expenses, assets, liabilities, and all these factors. हम ये भी देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस टाइम पे, उस करंट सेगमेंट में बैंकिंग में क्या हो रहा है. हो सकता है कि आप किसी एक बैंकिंग स्टॉक का यू आर डूइंग ए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक, and then you come to a conclusion that because that is a banking stock and overall maybe the banking sector is not doing good at that point of time. So you actually try to analyze from that data point that this banking domain is altogether is not doing good, so you should not be investing much on the banking domain. So these are very small common factors which actually determine ki you should be investing in that or not. So that is something that I was talking about is what fundamental analysis is. Similarly, when we talk about technical analysis, so technical analysis is another aspect of charting or analysis that generally the analysts use. But again, what technical analysis is? Technical analysis doesn't consider any of the past performance. कभी ये नहीं देखता है कि आपका कंपनी ने पहले क्या किया है, पहले का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसने अपने